Hello and welcome back to your and my channel Talk in English with Shelby. Today I'm going to take up the poem Daffodils. That was a request that was sent to me. So Daffodils is a very popular poem by William Wordsworth. William Wordsworth, पहले मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं. विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो उनका कहना है कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशंस. सो अकॉर्डिंग टू हिम पोइट्री जो है वो एक भावनाओं का फ्लो है, स्पॉन्टेनियस यानी कि एकदम से जो भावनाएं आती हैं अगर आप उन्हें कैप्चर करते हैं तो वो है पोइट्री. तो अगर आप इस पोम में देखेंगे द डैफोडिल्स तो यही चीज एक्चुअली यहाँ पे बिल्कुल एविडेंट हो रही है. इट इज क्वाइट एविडेंट दैट द पोम रिटन बाय William Wordsworth, Daffodil, is a spontaneous flow of emotions when he sees the daffodils, right? और इनकी जो एक बुक है लिरिकल बैलेड्स, ये उसमें पब्लिश हुई है एंड ही इज अ नेचर पोएट. तो आपको ये चीजें कुछ याद रखनी है जब भी आप पोइट्री के आंसर्स लिखते हैं. तो एक बात का ख्याल रखिए कि पोएट के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है. भाई अगर किसी ने कोई अच्छी पेंटिंग बनाई है तो आप सिर्फ पेंटिंग की तारीफ नहीं कर सकते ना, वाह क्या पेंटिंग है. भाई जिसने बनाई है उसको भी तो आप थोड़ा क्रेडिट देंगे. सिमिलरली जो आप पोइट्री के आंसर्स लिखते हैं उसमें बहुत जरूरी है कि आप पोइट के बारे में भी बोलें. You have to speak about the poet, you have to tell something about the poet कि उसका bent of mind क्या है, वो किस तरह की पोइट्री लिखता है. ठीक है, क्योंकि हर पोएट हर किस्म की पोइट्री नहीं लिखता, राइट? जैसे कि आप जानते हैं नॉवेल्स पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल आप, तो नॉवेल्स भी आपको पता है कि ये जो ऑथर है ये सिर्फ बच्चों की कहानियां लिखता है, लाइक रस्किन बॉन्ड. तो आप हमेशा उनकी कहानियों में बचपना देखेंगे, बच्चों से रिलेटेड स्टोरीज होंगी. फिर अगाथा क्रिस्टी हैं तो आप देखते हैं कि वो हमेशा डिटेक्टिव स्टोरीज लिखती हैं, रोमांटिक नहीं लिखती हैं. तो हर राइटर का अपना एक जॉनर होता है, अपना एक जॉनर होता है, अपना एक बेंट ऑफ माइंड होता है. सिमिलरली जो ये वर्ड्सवर्थ थे इनका बेंट ऑफ माइंड था कि ही वाज अ नेचर लवर. उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था, कुदरत के बहुत करीब थे. तो इसीलिए जो इनकी पोइट्री होती है वो नेचर से रिलेटेड होती है. तो डैफोडिल्स इज अगेन, डैफोडिल्स आर येलो कलर फ्लावर्स. ओके, और ये जो है ये वाइल्ड तरीके से उगते हैं. ये एक जगह पर क्लस्टर में या बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं उगते. जैसे अगर आप कभी पहाड़ों पे जाए हिल स्टेशन पे, तो जब आपकी गाड़ी ऐसे राउंड ले रही होती है तो साइड में आप देखेंगे वैलीज की तरफ बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही खूबसूरत अलग अलग कलर्स के, राइट? तो यहाँ पर भी वो, अब आप समझ लीजिए ये इंग्लैंड की बात है, राइट? तो इंग्लैंड में लेक्स होती हैं, स्मॉल पॉन्ड्स होते हैं, उसके चारों तरफ फ्लावर्स भी होते हैं. तो यहाँ ये जो डैफोडिल्स है ये किसी ने उगाए नहीं है. जब आप खुद से प्लांट्स लगाते हैं तो आप प्रॉपर क्यारी बनाते, यू मेक अ फ्लावर बेड, यू dig it properly, you put boundaries around it. ठीक. तो वैसे फ्लावर्स जो उगते हैं, जैसे आप कभी अगर ट्रैवल कर रहे हो रास्ते में बाय रोड और बाय ट्रेन, तो आपको सरसों के खेत दिखते हैं. तो कैसे फैले हुए होते हैं ना, एकदम आपको लगता है करोड़ों करोड़ों सरसों, येलो 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 थ्रू आउट, यू कैन सी द फील्ड इज ऑल येलो. सिमिलरली इसको भी डैफोडिल्स दिखते हैं और ऐसा लगता है कि there are 10,000 daffodils, uncountable, they cannot be counted. All right, so this poet, he always feels whenever he is lonely, he goes out into the uh, you know field, he goes out to take walk in nature. So he's that kind of a person. जब भी ये lonely feel करते थे ये nature में चले जाते थे and then he felt rejuvenated. All right, new energy, rejuvenated, happy, that way. So now let's begin the poem. Please keep a pencil in your hand. Daffodils, William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. I wandered lonely as a cloud. यहाँ पे जो figure of speech use हो रही है वो है simile. You know what is a simile? When you are comparing two things by using words like and as.
So he's saying, I wandered lonely as a cloud. Wandered means when you are moving without a purpose. जब आप जैसे स्कूल के कॉरिडोर्स में आप बिना कभी कभी बिना किसी रीजन के ऐसे ही घूम रहे होते इधर से उधर, डोंट योर टीचर्स टेल यू यू आर loitering around, you're wandering around. So wandering is when you are not going to a particular destination, you are just, you know, going here and there. Lonely as a cloud, lonely as a cloud. So cloud is sometimes in patches. You don't see sky. क्या होता है? Sky एक पूरा expanse है, but cloud is in patches. You know, आप एक cloud, दो cloud. So wandered lonely as a cloud. That is just like a cloud. I was moving around. All right. That floats on high over vales and hills. That floats means obviously it is floating in the air. जो क्लाउड होता है वो लाइट होता है, तो वो फ्लोट करता है, राइट, वो हवा के साथ बहता है. सो फ्लोटिंग ऑन हाई over vales and hills. So where does the cloud go? A cloud goes over valleys and hills. Similarly, he's saying even I am wandering in the valleys and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. So when all at once means suddenly, achanak se, he sees a crowd. Now, crowd is a personification because crowd is the word that we use only for human beings. We don't use crowd for flowers. Flowers के लिए हम क्या use करते हैं? Bunch या bouquet, right? तो यहाँ पे वो कहता है कि I saw a crowd, a host of golden daffodils. A host means, you know, lot of together in cluster. So crowd personification, he has personified daffodils. All right. Personification is a figure of speech जो होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, when you treat an inanimate object as a human being, then that is called personification. Beside the lake, beneath the trees, where did he see it? So the question can come, where did he see the daffodils? Beside the lake. Lake के बगल में, trees के नीचे. So beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Fluttering and dancing. Again, this is a significance of, you know, fluttering flags. जैसे flags flutter करते हैं one side to another side. So they were fluttering and dancing. Again, personification. They were dancing. Only human beings can dance or animals can dance, right? Nothing else. So flowers are dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Now, again, he is comparing metaphor, again, a metaphor. He's comparing the daffodils, that crowd of daffodils, that innumerable daffodils that he sees. He's comparing it to the uncountable stars in the galaxy. Milky Way is the galaxy. Continuous means without any break. तो इनका कहने का मतलब है जो डैफोडिल्स थे वो एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक थे, बीच में कोई गैप नहीं था कि यहाँ पे थोड़े से फिर वहां पे थोड़े से, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस थे वो. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. They stretched in never-ending line. That is, it seemed as if there was no end. उनकी कोई सीमा नहीं थी. वो एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक डैफोडिल्स थे. Along the margin of a bay. कहां पर थे ये? along the margin. कहां से कहां तक कवर कर रहे थे ये? The margin, यानी कि जो बॉर्डर था बे का. What is a bay? Bay is a land surrounded by water on three sides. Sorry, bay is a, I beg your pardon, that is a peninsula. Bay is a water body that is surrounded by land on three sides. तो अब आप समझ लीजिए वो triangular shape में from one end of the bay to another end तक spread कर रहे थे. 10,000 saw I at a glance. How many did he see? 10,000 I saw at a glance. Glance means एक झटके में. जैसे कहते हैं ना, अरे देखा, एक नजर में कितने थे? अरे 10,000 के करीब होंगे, ऐसा. At a glance मतलब एकदम से, taking a sudden view, taking a quick view. Tossing their heads in sprightly dance. Tossing means झटके से, sudden movement of the head from one side to another. So flowers are like this, you know, they have a stem, on top are the flowers. So from one side to another, the flowers were moving. Sprightly dance,
they were full of spirit. That is, ऐसा लग रहा था बहुत एनर्जी है उन फ्लावर्स के अंदर, वो कंटिन्यूअसली इधर से उधर मूव कर रहे थे. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling wave in glee. So he compares the dance of these daffodils to the movement of the waves. There were waves in that water body, there were waves in that lake. तो वो tides भी, tides also are synchronized. जब कोई डांस करता है, अगर ग्रुप में डांस कर रहा है तो सारे स्टेप सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए, राइट? नहीं तो डांस का मजा क्या? तो जब आप वेव्स देखते हैं, टाइड्स देखते हैं लेक्स में, तो क्या होती है? वो सिंक्रोनाइज्ड होती है, राइट? वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे आराम से जाती है, एक साथ जाती है. ऐसा नहीं कि एक वेव उठी फिर अचानक से एक वेव आधी उठी पूरी नहीं उठी. वो together, they go together, right? So he says even the flowers were able to defeat the waves which were sparkling waves in glee. Glee means happiness, and they were sparkling because obviously the sun rays were falling on the water, so they were sparkling. A poet could not but be gay. So he says, seeing such a wonderful scenario, waves are, rising, the flowers, yellow flowers are dancing. So एक poet जो है, एक कवि इस माहौल में खुश हो सकता है. A poet could not but be gay. That is, a poet can only be happy in such an environment. Why do you think a poet can only be happy? Why didn't he say any other person can be happy? The reason is, normally people when they want to be happy, they want to be with their friends, with their relatives, with people that they love, to spend their time. But it is only poets who like to be lonely. The reason is because when you want to write a poetry, you need to collect your thoughts, and when you want to collect your thoughts, that can only happen in loneliness. अगर आप कोई कविता लिखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर आपको इंस्पिरेशन मिल सके और बहुत ज्यादा लोग आपके आसपास ना हो, नहीं तो आपके विचार आप कैसे कलेक्ट करेंगे, राइट? तो इसीलिए वो कहता है कि ये जो देख रहा हूं मैं, वट एवर इज हैपनिंग, इसको देख के तो कोई भी पोएट खुश हो सकता है. गे मीन्स हैप्पीनेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय in such a jocund company. Jocund means jolly. Underline it. Jocund means jolly. Company. Whose company? The daffodils. So as I told you, personification है. तो यहाँ पे वो daffodils को अपना companion बता रहा है कि in their company I am so happy. They are giving me such a lot of joy. I gazed and gazed, but little thought. Gazed and gazed means he kept on staring at them, kept on looking at them, but little thought what wealth the show to me had brought. So as he kept on looking at them, उनको घूरते घूरते stare करते करते उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि वाह, क्या wealth मिली है मुझे आज. There's a difference between wealth and money. Wealth can also be, money is cash, money is rupees, money is currency, but wealth can be not just money, it can also be property, it can also be in kind, not just cash. All right, wealth. ठीक है, बहुत प्रॉपर्टी है आपके पास, पैसे कम है, मनी कम है लेकिन प्रॉपर्टी बहुत है, खेत बहुत है, राइट? तो वो वेल्थ होता है. वेल्थ इज something that you own in a vast way. तो यहाँ पे वो सोचता है कि वाह, मुझे आज कितनी अच्छी वेल्थ मिली है, मैंने आज कितना सारा मतलब वेल्थ कमाया है, कितनी चीजें पाई हैं. क्या पाया है? हैप्पीनेस. ऑलराइट, क्या पाया है? जॉली कंपनी. अब वेल्थ का यहाँ पे उसको कैसे रियलाइजेशन हुआ कि ये मेरे लिए वेल्थ है? Last para is very very important. Last stanza, sorry, is very very important because here you get the entire essence of the poem. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. For oft means when, many times on my couch. Couch is like a sofa. When I lie, that is when I am lying down, जब मैं लेटा हुआ होता हूँ. इन वेकेंट, वेकेंट मीन्स जब मेरा दिमाग खाली होता है, मेरे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आ रहे होते. वेकेंट कहते ना, अरे ये सीट वेकेंट है, यहाँ बैठ जाओ, मतलब खाली है. तो वैसे भी कभी कभी दिमाग भी खाली होता है, आप रिलैक्स्ड होते हो, ज्यादा कुछ सोच नहीं रहे होते हो, तो वैसी पोजिशन. और इन पेंसिव मोड. पेंसिव मोड मीन्स सैड मोड, व्हेन आई एम रियली डिप्रेस्ड, दैट काइंड. सो इन टू situations this happens. What happens? कौन सी दो situations है? You can write down the question. It is vacant, that is when his mind is khali, and pensive,
That is when he's in a sad mood. They flash upon that inward eye. Who are they? The question can come. Who are they being referred to? The daffodils. So they flash means वो suddenly उनकी inward eye means in the subconscious, inward eye. अब वो सामने तो नहीं आएंगे ना, ऑब्वियसली वो उसकी यादों में, उसकी मेमोरी में है. तो आपको जब आप बहुत दुखी होते तो अचानक से आपको कोई अच्छी चीज याद आ जाती है, वाह क्या दिन थे ना वो, मैं कितना एंजॉय किया था उस दिन. ऐसे ही इसके साथ भी होता है कि जब ये इसका दिमाग खाली होता है या इसका दिमाग ये बहुत सैड मूड में होता है, तो ये डैफोडिल्स का जो सीन है वो अचानक से फ्लैश, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना फ्लैशबैक, वैसे ही इसके दिमाग में फ्लैश कर जाते हैं. Which is the bliss of solitude. That is, bliss means blessing. Solitude means akelapan, loneliness. Which is the bliss of solitude? That is, this is a blessing in solitude. This is a blessing of being alone. That is, when you are alone, then you can remember all the good things that have happened in your life. Or when you are lying down on your couch and you are alone, when you are on your couch, when you are lying down and you are alone, so either if your mind is empty or you are in a sad mood, what happens? All the good things flash upon your mind, right? So similarly वो कहते हैं कि this is the bliss of solitude. वो loneliness को यहाँ पर लेकर सैड नहीं है कि अरे मैं बड़ा अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, ऐसा नहीं सोचता है वो. लोनलीनेस को वो पॉजिटिव वे में लेता है कि मैं लोनली जब होता हूँ तो उसकी ब्लेसिंग क्या होती है कि जब भी मैं अकेला होता हूँ, काउच पे लेटा होता हूँ, मेरा दिमाग अगर खाली है और या तो मैं सैड मूड में हूँ, तो ये डैफोडिल्स की सीन मेरे आंखों के सामने फ्लैश कर जाते हैं, मेरे सबकॉन्शियस में. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. और फिर क्या होता है? Then his heart is full of joy again and he also starts dancing with the daffodils. अब dancing with the daffodils doesn't mean कि वो खड़ा होके डांस करने लगता है, ऐसा नहीं. मतलब उसका दिल जो है, उसकी आत्मा जो है, उसका जो inner conscious है, that becomes happy with the daffodils. That's it. All right, so remember the metaphors, remember the figures of speech. All right, and write about the poet. So last stanza is very significant. So whenever you begin your answers, always introduce the poet. These lines have been taken from the poem Daffodils, written by William Wordsworth. He was a nature poet. All right, ऐसे 2-3 लाइन लिखने के बाद तब आप आंसर को शुरू करेंगे. So that's it for today. If you have any questions, you can paste them in the comment box. Now, after this, I'll take up Angel in Disguise, which is another story for class 10th. Thank you.